Hello everyone. Our today's topic is nitrogen assimilation. Up to we have studied the biological nitrogen fixation. In that we studied that the product that is formed is a nitrogen fixation is ammonium or ammonia. But that ammonia is also get assimilated into the different amino acids, or that nitrate also assimilated into different amino acids, and that will go into the organic biomass. So today we will discuss this nitrogen assimilation. In nitrogen assimilation, our first topic is ammonium assimilation. Why there is a need of ammonium or nitrate assimilation? Why there is a need of nitrogen assimilation? Because plant can store high amount of nitrate. There is no side effect of high amount of nitrate in the plant itself. But when animal consume that high nitrate consuming plant part, then it may be dangerous for those. It may causes methahemoglobinemia disease. In this disease, liver reduce nitrate to the nitrite, and these nitrite combine with the hemoglobins, and if these combine with the hemoglobins, then hemoglobin is unable to bind with the oxygen. Second thing, that how these nitrates are dangerous for the human and animals. These nitrates get converted into the nitrosamine, and these nitrosamine are highly carcinogenic compound. So some country limit their nitrate content in the plant material. एक बार आपने सुना भी होगा, जो हमारा पोर्ट पे राइस था वो वापस आ गया था, उसको लिया नहीं था एक्सपोर्ट के लिए, जब उसको चेक किया गया, बिकॉज उसको चेक किया गया तो उसके अंदर नाइट्रेट का जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा था. तो इस वजह से कुछ कंट्रीज़ ने अपने लिमिट रखा हुआ है कि फूड ग्रेन्स के अंदर या जो प्लांट मटेरियल हैं, जो भी फूड ह्यूमन बींग के कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रेट कंटेंट है उस लिमिट से अगर ज़्यादा होगा तो वो जो इम्पोर्ट नहीं करेंगे उस कंट्री से. टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमोनियम. लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि टॉक्सिक इफेक्ट नाइट्रेट के मोस्टली किस पे हैं, एनिमल्स पे हैं. बट जो अमोनियम है, इट में हैव द टॉक्सिक इफेक्ट बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल्स. और इफेक्ट कैसे करेगा ये? इट डेसिपेट द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि रिक्वायर्ड होता है जब रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस होता है कीमोस्मेटिक में, उसमें भी क्या है, जो H प्लस ग्रेडियंट है या प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. लाइकवाइज इन द फोटोसिंथेटिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. तो हाउ इट डिसिपेट द hydrogen ion concentration along the membrane? Because at high pH, when ammonium ion combines with the hydroxyl ion and forms the ammonia and removal of one molecule of water, these ammonium ion can't enter the transmembrane. These cannot go through the transmembrane, but this ammonia can go through the transmembrane. And here when it enter into the cell where pH is low, because concentration of H plus ions is high, so here it combine with the H plus ions and again form the ammonium ions. So in this way it consumes the more H plus ion to forming the ammonium. So in this case it disturbs the proton gradient along the membrane. Now we will study the ammonium assimilation. The first stable product of the nitrogen fixation is the ammonium, and at the physiological pH, that is जो physiological pH, at physiological pH ammonia combined with the H plus ion and forms ammonium. Here NH4 plus. Plants cannot fix dinitrogen directly, so plants complete their nitrogen requirement from the ammonium or nitrate from the soil. They all depend upon the ammonium or nitrate ion present in the soil. So in most soil ammonium is rapidly converted into the nitrate. जो ammonium present है वो convert हो जाता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रेट में रेपिडली कन्वर्ट कर देते हैं. अमोनियम बहुत कम अमाउंट में रहता है, और जो बच जाता है उसको वो किसके थ्रू, अमोनिया जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर एसिमिलेट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन. देयर आर सेवरल वेज ऑफ द अमोनियम एसिमिलेशन: कैटालिटिक अमाइडेशन, reductive amination, transamination and amidation. We will discuss all these ways one by one. First we will discuss the reductive amination. Reductive amination is catalyzed by an enzyme glutamate dehydrogenase.
During reductive amination, 2-alpha-glutarate combines with a ammonium ion in the presence of coenzyme NADH or NADPH, forms glutamate and H2O and NADP plus or NADH plus. So here this reaction is, you can see here, this reaction is reversible reaction, and both forward and reverse reactions are catalyzed by this single enzyme glutamate dehydrogenase. There are two types of this glutamate dehydrogenase. वन इज NADH, आपने देखा होगा ना यहाँ पे हमने P भी लिखा हुआ और H भी लिखा हुआ है, तो दोनों टाइप के ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज NADH डिपेंडेंट, जो कि किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड अदर इज NADPH डिपेंडेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होंगे, इन द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज. बोथ फॉर्म्स आर रिलेटिवली अबंडेंट, बट दोनों फॉर्म्स अबंडेंट है इसमें, बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. जो एसिमिलेशन होता है अमोनिया का, सेकंड जो पाथवे है GS गोगेट पाथवे, जो कैटालिटिक अमीनेशन है, उसको ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. उस पाथवे को ये इतने अमाउंट में होने के बाद भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ रिडक्टिव अमीनेशन पाथवे. अमोनिया कंबाइंस विद oxaloglutariate, replace this oxyl group, and here ammonium is added and form glutamate. Second way of ammonium assimilation is by GS GOGAT pathway or catalytic amination. Assimilation of NH4 into glutamine by legume nodule is accomplished by the glutamate synthase cycle, और ये साइकिल होगी इसके थ्रू ही होगा. This pathway includes two enzymes. First is glutamine synthetase, that is abbreviated as GS, and second is glutamate synthase, that is also named as GOGAT, very famous name, that is abbreviated as glutamine 2-oxoglutarate aminotransferase. Both these GS and GOGAT are the nodulin proteins present in the nodules, but these are present outside the peribacteroid membrane. ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके बाहर प्रेजेंट होंगे. बट जो अमोनियम फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे होगी, नोड्यूल्स में, क्योंकि बैक्टीरियोइड्स तो इसके अंदर प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे. तो जो अमोनियम की फॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर होगी, तो जो अमोनिया है उसको इस पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आएगी, तभी उसका एसिमिलेशन होगा अमाइनो एसिड्स में. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप glutamate combines with ammonium ion, as we know, and this reaction is catalyzed by the glutamate synthetase, not synthase. Synthetase enzymes are required ATP, that's why their name is synthetase, and forms the glutamine, ADP and inorganic phosphate. During the second step, the glutamine that is formed in the first step combines with alpha-ketoglutarate with the help of coenzyme NADH in the presence of GOGAT enzyme, forms two molecules of glutamate, glutamine add with 2-oxoglutarate in the presence of फेरिडॉक्सिन फॉर्म 2-ग्लूटामेट. अब आप यहाँ देखोगे कि दोनों रिएक्शंस में अलग अलग हैं, यहाँ पे NADH यूज हुआ है और यहाँ पे फेरिडॉक्सिन, और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, सेम ग्लूटामेट की हो रही है. तो ये कैसे है, लाइकवाइज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज में जैसे टू टाइप्स के प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी इस एंजाइम की टू फॉर्म्स प्रेजेंट है गोगेट की. एक तो क्या है, दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, वो किससे, NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और सेकंड क्या है, जो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. तो दो फॉर्म है, एक NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जो सेकंड फॉर्म है वो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. अच्छा, ये प्रेजेंट किस किस में होंगे, जो NADH टाइप का एंजाइम्स है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिड ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, अमोनियम का एसिमिलेशन, वो रूट और सूट दोनों में होता है. अगर कम अमाउंट में अमोनियम प्रेजेंट है तो दैट विल टेक्स प्लेस इन द रूट. इफ मोर amount of ammonium is present, then in the shoot also nitrogen assimilation will takes place. So this NADH type is present in non photosynthetic like roots, and ferridoxin dependent glutamate synthase is found in the chloroplast, and that will take electron from ferridoxin.
This is the overview of ammonium acylation by GS or GS. GOGAT pathway. Ammonium combines with the glutamate, form glutamine. Then glutamine combines with 2-oxoglutarate. It forms 2-glutamate. Here instead of glutamate, this is alpha-ketoglutarate. The third way of ammonium assimilation is transamination. As the name says, trans means transfer, amination means amino group का. So these are the transfer reactions of the amino group from one amino acid to the another. क्योंकि जैसे जो फर्स्ट और सेकंड पाथवे हैं उसके अंदर ग्लूटामीन और ग्लूटामेट की सिंथेसिस ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो नाइट्रोजन ग्लूटामीन एंड ग्लूटामेट में इनकॉर्पोरेटेड है that will transfer from these two and help in the formation of other new amino acids. So this type of the reaction are catalyzed by the enzyme aminotransferase. For example, here glutamate plus oxaloacetate forms aspartate because the amino group from glutamate is transferred to oxaloacetate and form the new amino acid aspartate, and glutamate after losing its amino group form 2-oxoglutarate. And this typical reaction is catalyzed by aspartate aminotransferase because here the new synthesizing amino acid is aspartate. These transamination reactions require pyridoxal phosphate as a cofactor. And these aminotransferases are found in cytoplasm, chloroplast, mitochondria, glycoxysomes and peroxisomes. This is transamination. Glutamate, here this amino group will transfer to the oxaloacetate and forms aspartate, and it will remain as oxoglutarate. The fourth reaction is amidation. Amides. What are amides? Amides are the derivatives of amino acids, and first amide identified is asparagine, that was isolated from the asparagus. That's why its name is asparagine. In 1866, it was the first amide to be identified. How asparagine is synthesized? Involves the transfer of amide nitrogen from glutamine to the aspartate. तो जो ग्लूटामीन है इसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, एक अमाइड नाइट्रोजन हो गए तो वो ट्रांसफर होगी एस्पार्टेट को एंड इट विल फॉर्म एस्पार्जिन, एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स द एटीपी, and this reaction is catalyzed by the enzyme aspartate synthetase. As the name says, that's why it's require ATP, that's why its name is synthetase. Here in this there are the two groups, two amino groups, NH2, and there is amide group. During this amidation reactions, this amide group will transfer to the aspartate and form the amide asparagine in the presence of enzyme asparagine synthetase, and it requires ATP. Next is, till now we completed the assimilation of ammonium by 4 ways. First way is reductive amination, second is catalytic amination or GS or GOGAT pathway, and third is transamination, and fourth is amidation. Now we will discuss the assimilation of nitrates. During the assimilation of nitrate, the first step is reduction of nitrate to nitrite. Plants assimilate most of nitrate absorbed by their roots into organic nitrogen compounds like amino acid, proteins. The first step in this process is this reduction of nitrate to the nitrite and this reaction takes place in the cytoplasm of the cell because the enzyme nitrate reductase is present in the cytoplasm which catalyze this reaction. During this reaction, nitrate will get converted into nitrite, and coenzyme used here is NADPH or NADH. Both type of enzymes are present here. Structure of nitrate reductase. Nitrate reductase is a dimer, consists of two subunits. It has 3 binding domain,
molybdenum complex, heme and FAD region. Nitrate, these nitrate reductase enzymes get electrons from the NADH at its C terminus, where NADH provides electron to FAD, and at the N terminus this molybdenum complex reduced nitrate to nitrite by supplying electron to it. These sequences of these heme regions are vary from species to species. Second step is reduction of nitrite to ammonia. As the nitrate converted into the nitrate is very toxic. If nitrite have very toxic effect than the nitrate, so it does not store in the cytoplasm. As the reduction of nitrate to nitrite, जो first step है, that will take place in the cytoplasm, that nitrate will then immediately transport to the chloroplast in the leaves and plastid in the roots, because जो second step है reduction of nitrite to ammonia, that will takes place in the plastid or chloroplast, उसके अंदर होगा ये. तो that's why it is immediately nitrite from cytoplasm transported to the plastid or the chloroplast. In this organelle, nitrite reductase reduce nitrite to the ammonia. Nitrite in the presence of ferredoxin produce ammonium ions, and ferredoxin is oxidized here and two molecules of water are formed. Structure of nitrite reductase. Reduced ferredoxin derived from photosynthetic electron. जो here are the two electron supplier. One is the ferredoxin, that is in the chloroplast. जो chloroplast के अंदर nitrite reduction होगा, that will takes electron from the ferredoxin during the electron transport in the chloroplast. But if it is take place in the non-green tissue like roots में होगा, तो वो कहाँ से, वो NADPH से इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, और ये NADPH कहाँ से आएगा, जो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ड्यूरिंग बनता है, that will supply the electron to this nitrite reductase in the roots. The nitrite reductase has two Fe sulfur and heme groups are present here. The electron from the ferredoxin transfer to this Fe iron sulfur group, then this transfer the electron to the heme group, and heme ultimately reduces the nitrite to the ammonia. This nitrate reductase is encoded in the nucleus and synthesized in the cytoplasm. Then how it is located to the chloroplast, because reactions तो chloroplast में हो रही हैं, because जो N terminal होता है उसके ऊपर एक peptide sequence होती है जो कि इसको signal provide करती है for moving into the plastids. Plants can assimilate nitrate in both roots and shoots. As I also earlier told that कि जो नाइट्रेट है उसका जो एसिमिलेशन होगा बोथ रूट्स एंड शूट्स दोनों में होगा. अगर रूट्स के पास में स्मॉल अमाउंट में नाइट्रेट है तो वो क्या है, उसको रिड्यूस कर देंगे, प्राइमरी रूट्स में ही होगा. अगर जो सप्लाई है नाइट्रेट की इंक्रीज हो जाती है तो जो ग्रेटर प्रोपोर्शन है एब्जॉर्ब नाइट्रेट का वो शूट को ट्रांसलोकेट हो जाएगा एंड देन एसिमिलेट देयर. और कुछ कंडीशंस के अंदर जो बैलेंस भी बना रहेगा उसके अंदर, रूट्स और शूट में जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का बैलेंस है दैट इज मेंटेन्ड इन बोथ. So with this topic assimilation of nitrogen, our lecture series of nitrogen metabolism is completed here. So we summarize this nitrogen metabolism. As we all know, nitrogen is present in maximum ratio in the atmosphere, but still then it is limiting nutrient to the plants because plant does not use that molecular nitrogen. प्लांट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है बैक्टीरियाज के अंदर वो किसके थ्रू हो रहा है, नाइट्रोजनेज एंजाइम्स के थ्रू, और प्लांट्स के पास वो नाइट्रोजनेज एंजाइम है नहीं. सो दैट्स व्हाई दे कांट डायरेक्टली यूज दैट मोलिकुलर नाइट्रोजन. और वो किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से. दोज नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में बी फ्री लिविंग लाइक साइनोबैक्टीरिया और मे बी सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइक राइजोबियम विद द लेग्यूम प्लांट्स.
राइजोबियम काजेज द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स, और जो रूट नोड्यूल्स है उनका लाइटली पिंक कलर होगा, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। और लैग हीमोग्लोबिन की सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये वहाँ पे क्रिएट करता है एनवायरमेंट, एक लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट क्रिएट करता है जो कि रिक्वायर्ड है डाइनाइट्रोजन की फंक्शनिंग के लिए। होस्ट प्लांट का क्या फंक्शन होगा इसमें, होस्ट प्लांट इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज जो एक मोलिकुलर नाइट्रोजन का फिक्स हो रहा है अमोनिया में, दैट विल रिक्वायर 16 एटीपी। तो वो एटीपी कहाँ से आएंगे, जो फोटोसिंथेट्स जो बना रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फोटोसिंथेट्स बना रहा है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होगा उनका, तो ये एनर्जी सारी कहाँ से आएगी, जो प्लांट्स के फोटोसिंथेट्स हैं वहां से आएगी। और इन टर्न प्लांट इसको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा है, तो प्लांट को क्या फायदा होगा, प्लांट्स को क्या मिल रही है, इन केस में कंबाइंड नाइट्रोजन मिल रही है जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करेगी। उसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, अमोनिया की, NH3 की फॉर्मेशन, जो इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा थ्रू नाइट्रोजन एसिमिलेशन और अमोनियम एसिमिलेशन। प्रोटीन्स, P2 प्रोटीन्स एंड सेलुलर और कार्बन बैलेंस, जो P2 प्रोटीन्स हैं वो प्लांट के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बैलेंस को सेंस कर लेते हैं एंड रेगुलेट द GS गोगेट एक्टिविटी, और उसी के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। प्लांट डू नॉट फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन, जनरली टेक अप नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो प्लांट्स जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन नहीं बनेंगे तो वो अपनी नाइट्रोजन किससे लेंगे, सोयल के अंदर जो नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है वहां से अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। देन नाइट्रेट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर अमोनियम एसिमिलेशन, फर्स्ट इज must be reduced to ammonium before it get incorporated into the organic molecules. इन द लीव्स रिड्यूसिंग पावर इज, लीव्स के अंदर जो रिड्यूसिंग पावर वो कहाँ से जनरेट होगी, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। सो द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया इन लीव्स कैन बी कंसिडर्ड फोटोसिंथेटिक। वाई, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और वही इसको हेल्प कर रहे हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो देन इट विल ऑल्सो स्टॉप। सो वी कैन से दैट रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया इन लीव्स इज photosynthetic. So thanks. With this, I have completed the nitrogen metabolism series of lectures. Thanks.